Good morning, students. Students, today I will teach you lesson number 13, Tasty India, in unit 2nd of unit 2nd. Now, see here, as all of you know that in India, in many states, there are many types of dishes, tasty dishes, in which of which some cities dishes are given here. Now see here, you have to, but that dishes are written in the jumbled letters. You have to unjumble it and write the correct name of the dish. Now see here, unjumbled the jumbled letters of the words and name these dishes पॉपुलर इन सम मेजर इंडियन सिटीज़. यहाँ पर कुछ डिशेस दिए गए हैं दैट आर इन जम्बल्ड फॉर्म, जम्बल्ड लेटर, एंड यू हैव टू अनजम्बल देम. स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज जम्बल्ड एंड अनजम्बल्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड? अनजम्बल्ड और जम्बल्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जम्बल्ड लेटर्स वो होते हैं, शब्द का वो लेटर होता है जो कि प्रॉपर ऑर्डर में, सिस्टमेटिक वे में नहीं रखा होता है, तो उसकी मीनिंग कुछ नहीं निकलती है. जैसे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड यू कैन से. बट इफ द words or letters are not put in the proper order, then it will be give no meaning, then it will be called the meaningless word. जब लेटर्स, अक्षर क्रम में नहीं रखे जाते हैं तो वह मीनिंगलेस वर्ड, निरर्थक अर्थ बताता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है. नाउ सी हियर, you have to name, unjumbled it and name the correct dish. Number 1, see here, people of Delhi like to eat. Delhi, as you know, the capital of India. Capital of India is Delhi. What the people of Delhi like to eat? What is famous in Delhi is, here you see the words are in jumbled letters, means not it correct order. WALHA, what's meaning it's giving? ये क्या अर्थ बताना है? कोई अर्थ नहीं, इसलिए निरर्थक शब्द है. इसी शब्द को, इसी लेटर्स को अनजम्बल्ड करना है. अनजम्बल्ड मीन्स प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है जिससे ये मीनिंगफुल वर्ड बताए. जैसे HALWA, HALWA, हलवा. यू सी हियर HALWA. I have arranged these letters in the proper way. इन्हीं लेटर्स को मैंने प्रॉपर वे में अरेंज किया है, तो ये मीनिंग बताता है हलवा. नाउ यू सी हियर PRUI, दिस इज जम्बल्ड लेटर, क्रम में नहीं है. यू हैव टू पुट इन द करेक्ट फॉर्म. PURI, पूरी, पूरी. हियर यू से RKHEE. what is this? KHEER, खीर. HCAPTAI, this is meaningless word, you have to rearrange this. CHAPATTIS, chapatis. Here you see, people of Chennai like to eat. Do you know the capital of Tamil Nadu is Chennai? Capital of Tamil Nadu is Chennai, and this is in the Chennai is in the south of India. साउथ इंडिया में, साउथ में है ये, इंडिया के साउथ रीजन में है चेन्नई, और तमिलनाडु का ये कैपिटल है. एंड व्हाट इज फेमस इज चेन्नई इज, सी हियर SADO. व्हाट मीनिंग इट इज गिविंग? नथिंग, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है. सो यू हैव टू रीअरेंज इट
unjumbled it, and you will get the meaning DOSA, dosa. UMUPA, UPMA, upama. DVAA, vada, VADA, vada. ILDI, IDLI, idli. Next you see, people of Kolkata like to eat. Where is Kolkata in India map? It is in the east side, east middle of the country India. So Kolkata is the capital of West Bengal. All of you know this. Kolkata is the capital of West Bengal. What there people like to eat? Here you see, this is the unjumbled word of Rasgulla. ROSOGULLA, Rasgulla. And if we unjumble this will give the meaning sandesh. This is one type of sweet. एक प्रकार की मिठाई होती है संदेश. And this is cham. Everyone knows this and love to eat this. Now, what is this? This is fish. Fish. Now, see here number 4. People of Ahmedabad like to eat. Where is Ahmedabad in our map? In the map of country, our country India, in the west side. West side. And Ahmedabad is the capital of Gujarat. You know this. Now see what is this? This is rice. If we unjumble this word, it will become the rice, meaningful word rice. And this is dal. And this is dhokla. And this is papad. So I have told you all the things, all the words, and you write in your book and learn with the spelling. Okay, thank you, Jai Gurudev. And tell me, all of you, what you like to eat. Okay, thank you, Jai Gurudev.